अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट 10th मैथ्स यूनिट नंबर 1 में एक्सरसाइज हमारी है 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का आज हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 15 जो है वो करने जा रहे हैं। द क्वेश्चन इज x + 1 x + 3 x - 5 x - 7 is equal to 192. Beta, first of all, we try to arrange the atoms in such a way x plus 1 into x minus 5 and x plus 3 into x minus 7 is equal to 192. Now we multiply two terms. First two terms x square minus 4x minus 5 and the next two term x square minus 4x minus 21 is equal to 192. यहाँ हम ऐसे कर लेते हैं -192 कर लेते हैं is equal to 0. Now beta put the substitution. Let x square minus 4x is equal to y. Then put in equation 1. Now the equation 1 is y minus 5 into y minus 21 minus 192 is equal to 0. Now multiply these two terms. Then the answer is x square minus 26x plus 105 minus 192 is equal to 0. These are two like terms. We calculate them. X square minus 26x minus 192 में से हम जो है वो माइनस 192 को ऐड करेंगे 105 में, तो 192 और 105 minus 87 is equal to 0. ये बेटा हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम सॉल्व कर सकते हैं 3 मेथड से, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, या फिर जो है वो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम फैक्टराइजेशन को शॉर्ट मेथड है उसी को यूज़ करेंगे। तो हमें चाहिए 87 and 26 and the factor is y square minus 29x minus 3x plus 3x minus 87 is equal to 0. y का ये हमारे पास टर्म जो थी वो y में थी, तो इधर भी हमारे पास वेरिएबल अब आएगा क्योंकि हमने लेट किया था इसको y का मैं y minus 29 प्लस 3 का मैं y minus 29 is equal to 0. Now the y minus 29 is as a common x plus 3. Put y minus 9, y minus 29 is equal to 0 or y plus 3 is equal to 0. The value of y is equal to 29
and the second value is y is equal to -3. Now we put the value of y. Y is equal to x square minus 4x. X square minus 4x is equal to 29, and x square minus 4x is equal to -3. X square minus 4x minus 29 is equal to 0 for standard equation, and x square minus 4x plus 3 is equal to 0 for standard equation. Now we try to solve these two equations for the value of x, and we use a quadratic formula for first equation, in which a is equal to 1, b is equal to -4, and c is equal to -29. And the quadratic formula is x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac over 2a. Now put the values of a, b and c. X is equal to minus b minus 4 plus minus 4 square minus 4a1 c minus 29 over 2 into 1. X is equal to minus plus 4 plus minus 4 minus 4 square 16 minus plus 4 multiplied by 29. 4 9s are 36. 3 carry. 4 2s are 8 and 3 11. 116 over 2 1s are 2. X is equal to 4 plus minus 116 plus 16 means 132 over 2. तो ये बेटा हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. x is equal to 4 plus minus 132 over 2. सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास, इसको भी सॉल्व करेंगे फॉर वैल्यू ऑफ x. We try to factorize this equation, and factor is x square minus 3x minus x plus 3 is equal to 0. X common, x minus 3 minus 1 common, x minus 3 is equal to 0. X minus 3 is a common factor, and the remaining factor is x minus 1 is equal to 0. Now put x minus 3 is equal to 0 or x minus 1 is equal to 0, and the value of x is 3 and x is equal to 1. तो ये बेटा हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 3 1 and 4 plus minus 132 square root over 2. Next question बेटा, next question is question number 16. And the question is x minus 1 into x minus 2 into x minus 8 into x plus 5 is equal to plus 360 is equal to 0. बेटा दोनों टर्म्स को टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो मैनी है. -1 -2 -3 एंड -8 + 5 आल्सो -3. द इक्वेशन
रेंज फॉर्म, तो जब बेटा हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे टू टर्म्स को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2 1 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 5 40 plus 360 is equal to 0. This is equation number 1. Now put x square minus 3x is equal to y. Then the equation 1 is y plus 2 into y minus 40 plus 360 is equal to 0. Multiply these two equations. Y square minus 38y minus 80 plus 360 is equal to 0. टू टर्म्स हमारे पास स्लाइड टर्म्स हैं, माइनस 80 प्लस 360, इनको जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे। 360 माइनस 80 वाई स्क्वायर माइनस 38y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। ये बेटा हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, इसको अब हम फैक्टराइज करेंगे। हमें चाहिए 280 एंड 38 एंड द फैक्टर इज y स्क्वायर माइनस 28y माइनस 10y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। y कॉमन, y माइनस 28 माइनस 10 कॉमन, y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। y minus 28 common, y minus 10 is equal to 0. Put y minus 28 is equal to 0 or y minus 10 is equal to 0. The value of y is 28 and the value of y is 10. Now we'll put the value of y. Value of y, and value of y is x square minus 3x. X square minus 3x is equal to 28, and second x square minus 3x is equal to 10. X square minus 3x minus 28 is equal to 0 for standard form, and x square minus 3x minus 10 is equal to 0 for standard form. Now we solve these two equations for value of x. फर्स्ट इक्वेशन में आपको चाहिए 28 और 3 चाहिए, एंड फैक्टर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। x common, x minus 7 plus 4 common, x minus 7 is equal to 0. x minus 7 common and the remaining factor is x plus 4. We put x minus 7 is equal to 0 or x plus 4 is equal to 0, and the value of x is 7 and minus 4. Now we solve the second equation. Second equation is solved by quadratic formula in which the value of a is equal to 1, b is equal to minus 3 and c is equal to minus 10. But also this equation solved by factorization, and we try to solve for factorization. Minus 10 and minus 3, 5 2's are 10. X square minus 5x plus 2 minus 10 is equal to 0. X common, x minus 5 plus 2 common,
x minus 5 is equal to 0. X minus 5 has a common factor and the remaining factor is x plus 2 is equal to 0. Put x minus 5 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0. The value of x is plus 5 and the value of x is minus 2. Now the solution set is 7 minus 4 5 minus 2. तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 16.